પ્રિય વૈષ્ણવો, ગંગા દશેરાના પાવન પર્વ પર શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન પાન કર્યા કે નહીં? ચાલો ને આજે શબ્દોના જળથી સ્નાન કરીએ અને ગુણગાનના અમૃતથી પાન કરીએ. શું આપ બધા તૈયાર છો? તો પધારો યમુનાજીના પદોમાં તન્મય થવા, ભક્તિ ગંગામાં ડૂબી જવા, ભવસાગરને તરી જવા અને ભાવસાગરમાં ડૂબી જવા, તેમજ શ્રી પ્રભુની કૃપાની લહેરો માણવા. તો ચાલો આજે આ ગંગા દશેરાના પર્વને એક નવા જ રૂપમાં માણીએ અને અનેરો આનંદ લૂંટીએ. આપણે તો બસ બહાનું જોઈએ છે કે કોઈ પણ ભાવે બસ નિષ્કામ ભાવથી પ્રભુના ગુણગાન કર્યા કરીએ. ગંગા દશેરાના દિવસે સ્નાનનું મહાત્મ્ય છે, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગ માટે તો સાચું સ્નાન શ્રી યમુનાજીના ગુણગાનથી અને સત્સંગથી થાય છે. જેમ આપના સંસર્ગથી ગંગાજી પુષ્ટિમાં વહ્યા, મમ દેહ મન શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય થાય એવા રાખજો. આ પંક્તિ પોતે દર્શાવે છે કે શ્રી યમુનાજી એ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટેનું પ્રવેશ દ્વાર છે. તો આજે આપણે એ સ્તુતિ કરીએ જે યમુનાજીનો મહિમા દ્વારા ગંગાજીને પણ મહિમાવાન બતાવે છે, જેથી સ્તુતિમાં સંવાદ છલકે. ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી. પ્રિય વૈષ્ણવો, સ્નાન થાય શરીરનું ગંગાજીમાં અને અંતઃકરણનું યમુનાજીના ગુણગાનમાં. પાન થાય જળ મધ્યે નહીં પણ પદ મધ્યે ને યમુનાષ્ટકના દરેક શ્લોકે તન મન ધન શુદ્ધ થાય, તનુ નવત્વની પ્રાપ્તિ થાય. એ જ શ્રીમદ પુષ્ટિનો સાચે દશેરા છે ને. ઓ શ્રીનાથજી. આશ્વાસોને શ્રી યમુનાજીની શોભા વડે પુષ્પકુંજ બનાવીએ. યમુનાષ્ટકના શ્લોકથી સ્નાન ભાવ, 41 પદોના ઉદ્ઘોષથી પાન ભાવ અને શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિથી ધન્યતાનો અનુભવ કરીએ. આપણે 41 પદો તો કરતા હોઈએ છીએ, આજે 108 પદોના ભાવને માણીશું, કારણ કે આજે પાવન દિવસ છે, ગંગા દશેરાનો અવસર છે. શરીર ગંગામાં સ્નાન માટે તો અઢળક યાત્રીઓ તટે ઉતરી આવે છે, પણ આજ આપણે એક અલૌકિક યાત્રા માટે તૈયાર થયા છીએ અને એ યાત્રા છે માનસ ગંગામાં ડૂબકી લગાવવાની. અને એ માનસ ગંગા વહે છે શ્રી યમુનાજીના પવિત્ર સ્તુતિઓના રૂપમાં. કેમ કે વચનામૃતમાં પણ કહ્યું છે ને કે યમુનાષ્ટકનો પાઠ એ યમુના સ્નાન છે અને યમુનાજીના પદોનો પાઠ એ યમુના પાન છે. અને એ રીતે આજે આપણે કોઈ તળાવ, નદી થી સ્નાન કરવાના નથી કે કોઈ સરોવરમાં સ્નાન કરવાના નથી, પરંતુ ભાવાત્મક સ્વરૂપે ગુણગાનના રૂપમાં સ્નાન પાન કરવાના છીએ. આજે જ્યારે બધા યાત્રાળુઓ ગંગાજીના તટે ઊભા રહી જળ લઈને મસ્તક પર વહાવે છે, ત્યારે આપણે ભક્તિના તટે ઊભા રહી શ્રી યમુનાજીના પદો હાથમાં લઈ એમના એક એક ગુણને હૃદય ઉપર વહાવીએ. એમનું એક એક પદ ભીંજવે આપણું અંતઃકરણ. આજે આપણે કોઈ શ્લોક માત્ર રટવા નહીં જઈએ. પ્રભુને જે નદીઓ પ્રિય છે, પ્રભુને જે પ્રિય છે એવા શ્રી યમુનાજી એ અનુભવ મેળવવાનો આપણે રંચક પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. હવે યાદ કરીએ એક યમુનાષ્ટકનો પવિત્ર શ્લોક. યયા ચરણ પદ્મજા મુરરીપો પ્રિયમ ભાવુકા સમાગમનતો ભવત સકલ સિદ્ધિદા સેવતામ તયા સદૃશતામિયાત
કમલજાસ પત્ની વયત હરિપ્રિય કલિંદયા મનસી મે સદા સ્થિયતામ. જેમ આપના સંસર્ગથી ગંગાજી પુષ્ટિ માવહ્યા મમ દેહ મન શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય થાય એવા રાખજો. વિરહાર્તી માહે માત મારા હૃદયમાં બિરાજજો. વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. હે પ્રેમાળ માતા શ્રી યમુના મહારાણીજી, આપના શુભ સમાગમને લીધે શ્રી હરિના ચરણ કમલથી પ્રગટ થયેલા શ્રી ગંગાજી પણ મોર દૈત્યના શત્રુ શ્રી મુરારી ભગવાનના પ્રિય બન્યા, તેમજ સદા સેવા કરવાને તત્પર એવા પોતાના ભક્તોને સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ આપનારા થયા. હે સૂર્યના પુત્રી અને યમરાજાના ભગિની, ત્રિલોકમાં આપની બરોબરી બીજું કોણ કરી શકે? જો કદાચ કોઈ કરી શકે ને તો તે સમાન સૌભાગ્યવાળા શ્રી લક્ષ્મી દેવી છે. આપ શ્રી હરિના પ્રિય છો અને ભક્તોના દોષોનો નાશ કરવા વાળો છો. આપ મારા મનમાં નિરંતર નિવાસ કરો. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જો કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જો કી જય. ઓહ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી. એટલે જેમ શ્રી યમુનાજીના પદોમાં આપણે અંતર્મુખ થઈએ, ભાવ સમજીએ તો અનેરો આનંદ આવે. અને આ આજે ગંગા દશેરા પણ ભાવરૂપે યમુના દશેરા બની જાય એવું જ છીએ. આજે તો એવો ઉદ્ઘોષ કરીએ કે હે શ્રી યમુનાજી, આ આપના પદો, આપના ગુણો, આપના શ્લોકો એમ જ આપની ધારાઓ છે, જેમાં અમે સ્નાન કરવા માટે, પાન કરવા માટે આવ્યા છીએ. સ્નાન પણ થયું, પાન પણ થયું અને સાથે સાથે મન અને અંતઃકરણ પણ પુષ્ટિમાં પ્રવેશી ગયું. આવો તો સૌહાર્દ ભર્યા હૃદયથી આજની સ્તુતિરૂપ સેવા માટે પાછા પદોમાં પ્રવેશ કરીએ અને આ સર્વે પદો સાંભળતા જઈએ એવા ભાવથી કે મારું અંતઃકરણ આજે યમુનાજી જેવું પાવન વિશુદ્ધ થાય. કારણ કે કહેવાય છે ને, વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મન સુખમ ભાવય. તો આપણા હૃદયને પણ એવું વિશુદ્ધ બનાવીએ કે જેના કારણે શ્રી ઠાકોરજી લીલા પરિકર સહિત પધારે અને જેમાં કૃષ્ણ પ્રેમ વહે અને જેમાં શાંતિની તરંગો રમે. જય યમુના મહારાણી માં, જય શ્રી વલ્લભ પ્રભુ. તો ચાલો પ્રિય વૈષ્ણવો 108 પ્રકારના ભાવોને માણીએ. કારણ કે આ 108 પદોનું સંકલન એટલું સુંદર છે. આપણે શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરીએ છીએ, 41 પદોનો પાઠ કરીએ છીએ. હમણાં તે સત્સંગમાં લીધું જ હતું, તો અનેરા રૂપમાં સત્સંગ કરવા માટે આજે આપણે શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ 108 પ્રકારે કરીશું. 108 ભાવ આપણે પુષ્પોના રૂપમાં શ્રી યમુનાજીના ચરણારવિંદમાં ધરીશું. એક એક પુષ્પ એક એક ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે અને આ પુષ્પ છે કમલ પુષ્પ, નિષ્કામ પુષ્પ. આપણે સ્તુતિ રૂપે આપણે શ્રી યમુનાજીને ધરી રહ્યા છીએ અને શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાનપાન કરવાનો આ અનેરો અવસર છે. ભક્તિ ગંગામાં
ડૂબી જવાનો આ અનેરો અવસર છે. તો ચાલો તૈયાર છો ને આ ભક્તિ ગંગામાં ડૂબવા માટે? આપણે આ 108 પદોની શરૂઆત કરીએ ને તે પહેલા થોડુંક શ્રી યમુનાજીના મહિમાને સમજી લઈએ. કારણ કે શ્રી યમુનાષ્ટકની વાત આવી છે માટે થોડુંક શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપને સમજી લઈએ. શ્રી યમુનાજી 8 પ્રકારનું ઐશ્વર્ય આપનારા છે. સાક્ષાત લીલા ઉપયોગી દેહ, એમની લીલાઓનું અવલોકન, ભગવાનના રસનો અનુભવ, સર્વાત્મ ભાવ વગેરે સમગ્ર સિદ્ધિઓને આપવામાં આપ કારણભૂત છે. આ થયું પ્રથમ ઐશ્વર્ય. બીજું, ભગવાનમાં ભક્તિ વધારવી. ધ્યાન આપજો, એટલે જ તો આપણે યમુનાજીના ગુણગાન કરી રહ્યા છીએ પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે. અહીં કહ્યું ને કે ભગવાનમાં ભક્તિ વધારવી, ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં જે વિઘ્ન હોય તેને દૂર કરી શ્રી ભગવાનનો અનુભવ થાય એવી શુદ્ધિ કરવા પણ એ ત્રીજું ઐશ્વર્ય છે. ચોથું, ભગવાનના જેવા શ્રી યમુનાજીમાં શ્રી, જ્ઞાન વગેરે 6 ધર્મો રહેલા છે. તેથી ભગવાનનો સંબંધ વિનાશ્રમે કરાવે છે. એટલે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ 6 ગુણધર્મો શ્રી યમુનાજીમાં પણ બિરાજે છે. પાંચમું, ભક્તોના દોષોને નિવારણ કરે છે. છઠ્ઠું, પોતાના સેવનથી વ્રજ ભક્તોના જેવા જીવોને ભગવાનના કૃપાપાત્ર કરે છે. સાતમું, સેવા ઉપયોગી દેહનું સંપાદન કરે છે. અને આઠમો, પ્રભુના પર સેવાનું જળ જે લીલા વખતે પોતાનામાં આવેલું છે ને તેનો સંબંધ ભક્તોને કરાવનારા છે. એટલે આ યમુનાષ્ટકની ફલશ્રુતિ શું છે? તો કહે છે કે 9 શ્લોક જે કોઈ નિરંતર પાઠ કરે છે તેને તેના સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે. મોક્ષ આપવા વાળા મુકુંદ ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય છે. તે પ્રીતિથી સર્વ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે અને દોષ નિવારક પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. સ્વભાવ દુષ્ટ હોય તે ઉત્તમ થાય છે. આથી સંસારમાંથી આસક્તિ છૂટે છે અને પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે. આવા શ્રી યમુનાજીના નામનો મહિમા છે. એટલે જ કહેવાય છે ને યમાવતી જીવાન ઇતિ યમુના. એટલે જે જીવોને નિયંત્રણમાં રાખે ને, ભક્તિ માર્ગના ધારાધોરણ મુજબ રાખે તેનું નામ યમુના. અને કહેવાય છે યમાવતી જીવાન ભગવત સમીપે પ્રાપવતી વાસા યમુના. એટલે પોતાના ભગવતીઓને પ્રભુ પાસે લઈ જઈને પ્રભુનો સમાગમ કરાવી આપે તેનું નામ યમુના. એટલે ગર્ગ સંહિતામાં શ્રી યમુનાજીના પ્રાકટ્યનો ઉલ્લેખ છે. શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના રમણ માટે શ્રી સ્વામિનીજીને પોતાના સ્વરૂપમાંથી પ્રકટ કર્યા. રમણને યોગ્ય સ્થળ ક્રીડાભૂમિના નિર્માણ માટે શ્રી સ્વામિનીજીની વિનંતીથી શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના ડાબા વક્ષસ્થળમાંથી દિવ્ય સ્વરૂપા યમુનાજીને પ્રકટ કર્યા. જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીએ પૃથ્વી પરના જીવોના ઉદ્ધાર માટે પોતાની સમગ્ર લીલા પૃથ્વી પર પ્રકટ કરવાની ઈચ્છા કરી ત્યારે પૃથ્વી પર વ્રજમંડળમાં યોગ્ય લીલા સ્થળના નિર્માણ માટે સૌપ્રથમ શ્રી યમુનાજીને પધારવા આજ્ઞા કરી. આથી શ્રી યમુનાજી જલ સ્વરૂપે કલિંદ પર્વતના શિખરનું અવલંબન લઈ પૃથ્વી પર પધાર્યા અને ત્યાંથી વ્રજમંડળમાં પધાર્યા. એટલે શ્રી યમુનાજીનું પ્રાકટ્ય એ શ્રી ઠાકોરજીના હૃદય કમલમાંથી થયું છે અને ગંગાજીનું પ્રાકટ્ય એ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ કમલમાંથી થયું છે. અને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી જ શ્રી ગંગાજી પણ પ્રભુને પ્રિય બન્યા છે. એટલે જ આપણે ગાઈએ છીએ જેમ આપના સંસર્ગથી ગંગાજી પુષ્ટિ માં વહ્યા મમ દેહ મન શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય થાય એવા રાખજો વિરહાર્તી માહે માત મારા હૃદયમાં બિરાજજો વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને શ્રી
કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. તો ચાલો વાલા વૈષ્ણવો, હવે આ 108 પ્રકારના ભાવોમાં પ્રવેશ કરીએ. ખૂબ જ શાંતિથી ચિત્ત પ્રભુમાં પરોવી મનને એકાગ્ર કરી એક એક પદનો આનંદ માણીએ અને શ્રી યમુનાજીના ચરણ સરોવરની મીન બની જઈએ. કહેવાય છે ને, મીન રહત જલ આશરે નિકસત હી મર જાય. જ્યો શ્રી વિઠ્ઠલનાથ કે ચરણ કમલ ચિત્ત લાય. એટલે જ આપણે શ્રી યમુના પાન એક નવા જ રૂપમાં 108 પદોના રૂપમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. માટે ખૂબ જ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવપૂર્વક શ્રવણ કરજો. કારણ કે જ્યાં ભક્તિ રૂપ શ્રી યમુનાજી વહે છે ને અને સ્મૃતિ રૂપ ગંગા પૂજાઈ રહી છે, જ્યાં શ્રીમદ આચાર્યજીના શબ્દો એક ગંગા ધ્વનિ બનીને સંભળાઈ રહ્યા છે. ભક્તિથી સંગ થયેલા સંમિત જ્ઞાન ગંગામાં ગંગા દશેરાના ઉત્તમ પાવન અવસર પર આપણે આ અલગ જ રૂપમાં માણી રહ્યા છીએ. કારણ કે જે શ્રી યમુનાજીનો સંગ કરે તે તો પાવન થાય જ છે, અને એ યમુનાજીનો સંગ પામે એવા ગંગાજી પણ શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય બન્યા છે. તો આપણે પણ શ્રી યમુનાજીનો દ્રઢાશ્રય કરીને પ્રભુને પ્રિય બનીએ. ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી. તો ચાલો હવે આપણે ભાવરૂપી સાગરમાં ડૂબવાનો પ્રયાસ કરીએ. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જી કી જય. શ્રી યમુનાજીના પ્યારા અને વલ્લભના લાડીલા વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે પરમા એકાદશી છે. પરમા એટલે પરમ સુખ આપનારી. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં પરમ સુખ આપનાર શ્રી યમુનાજી છે. એટલે આજે આપણે શ્રી યમુનાજીની પ્રસન્નતા માટે શ્રી યમુનાજીના 108 પદનો પાઠ કરીશું. મેં યુટ્યુબમાં ઘણું સર્ચ કર્યું, પણ ક્યાંય પણ મને આ 108 પદ ન મળ્યા. એટલે એમ થયું કે જાણે શ્રી યમુનાજી એ સંકેત કરી રહ્યા છે કે આપણે શ્રી યમુનાજીના 108 પદ કરીએ. એટલે કોઈ વૈષ્ણવને 108 પદનો પાઠ કરવો હોય તો કરી શકે. શ્રી યમુનાજીના 41 પદ વિશે તો આપણે જાણીએ જ છીએ, પણ શ્રી યમુનાજીના 108 પદનો પણ ખૂબ જ મહિમા છે. શ્રી યમુનાજીના 108 પદ. પદ પહેલું. પિય સંગ રંગ ભરી કરી કલોલે, सबन को सुख दे न पिय संग करत सेन, चित्त में तब परत चैन जब ही बोले, अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करी अतोले, दरस कर परस कर ध्यान ही अमे धरे, सदा व्रजनाथ इन संग डोले, अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, ये ही लीनो परन दे जुकोले, ऐसी श्री यमने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाय नग अमोले. पद बीजू. श्याम सुख धाम जहां नाम इनके, निश दीना प्राणपति आय ही यमे बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके, यही जग में सार कहत वारंवार, सबन के आधार धन निर्धन नके, लेत श्री यमुने नाम देत अभय पद दान, रसिक प्रीतम पिया बस जोई नके. पद त्रीजो. कहत श्रुति सार निर्धार करके, इन बिना कौन ऐसी करे है सखी, हरत दुख द्वंद्व सुख कंद बरखे, ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनकी भूजा वाम फरके, दौर कर सौर कर जाय पिय सो कहे, अति आनंद मन में जुहर रखे, नाम नीर मोल नगले को ना सके, भक्त राखत ही ये हार कर के, रसिक प्रीतम जो की होत जा पर कृपा, सोई श्री यमुना जी को रूप पर रखे.
પદ ચોથું. नैन भर देखय भानु तनया केली पिय सो करे भ्रमर तब ही परे श्रम जल भरतयानंद मनया चलत टेढ़ी होयले तपीय को मोही इन बिना रहत नहीं एक छीनया रसिक प्रीतम रास करत श्री यमुना पास मानो निर्धन की हे जुधनया. पद पांचमो. श्याम संग श्याम वे रही श्री यमुने सुरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली मानो आतुर अली रही न भवने कोटि काम हिवार रूप नैनन निहारो लाल गिरी धरन संग करत रमने हरखी गोविंद प्रभु निरखी इनकी ओर मानो नव दुल्हनी आई गवने. पद छठू. श्री यमुना सी नहीं को और दाता जो इनकी शरण जात है दौर के ताही को तिही चीनो कर सना था यही गुण गान रस खान रसना एक सहस्त्र रसना क्यों न दे विधाता गोविंद प्रभु तन मन धन वारने सब ही को जीवन इनके जुहा था. पद सातवों. श्री यमुना जस जगत में जोई गावे ताके अधीन वे रहत है प्राणपति नैन अरु बैन में रस जुछावे वेद पुराण ते बात यह अगम है प्रेम को भेद को न पावे कहत गोविंद श्री यमुने की जा पर कृपा सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे. पद आठमो. चरण पंकज रेणु श्री यमुने जुदेनी कल योग जीव उद्धारण कारण काटत पाप अब धार पेनी प्राणपति प्राण सूत आए भक्त नहित सकल सुख की तुम हो जुश्रेनी गोविंद प्रभु बिना रहत नहीं एक छिनो अति आतुर चंचल जुनैनी. पद नवमो. धाय के जाय जो श्री यमुना तीरे ताकी महिमा अब कहाँ लग बरनिए जाय पर सत अंग प्रेम नीरे निश दिना केली करत मनमोहन पिया संग भक्तन की है जो भीरे चित स्वामी गिरी धरन श्री विठ्ठल इन बिना नेक नहीं धरत धीरे. पद दसमो. जा मुख ते श्री यमुने यह नाम आवे ता पर कृपा करे श्री वल्लभ प्रभु सोई श्री यमुना जी को भेद पावे तन मन धन सब लाल गिरी धरन को दे के चरण जब चित्त लावे चित्त स्वामी गिरी धरन श्री विठ्ठल नैनन प्रगट लीला दिखावे. पद 11मो. धन्य श्री यमुने निधि देनहारी करत गुण गान अज्ञान अघ दूर करी जाय मिलव तपीय प्राण प्यारी जिनको संदेह करो बात चित में धरो पुष्टि पथ अनुसरो सुख जुकारी प्रेम के पुंज में रास रस कुंज में ताही राखत रस रंग भारी श्री यमुने अरु प्राणपति प्राण अरु प्राण सूत चहु जन जीव पर दया विचारी चित स्वामी गिरी धरन श्री विठ्ठल प्रीत के लिए अब संगधारी. पद 12मो. गुण अपार एक मुख कहाँ लो कहिए तजो साधन भजो नाम श्री यमुना जी को लाल गिरी धरन वर तब ही पइये
परम पुनित प्रीत की रीत सब जान के दृढ़ करी चरण कमल जुगहिए चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल ऐसी निधि छांडी अब कहाँ जो जाइए। पद 13 चित्त में श्री यमुना निश दिन जो राखो भक्त के वश कृपा करत है सर्वदा ऐसो श्री यमुना जी को है जो साखो जहाँ मुख ते श्री यमुने यह नाम उच्चरे संग कीजे अब जायता को चतुर्भुज दास अब कहत है सबन सो ताते श्री यमुने यमुने जो भाखो। पद 14 प्राणपति विहरत श्री यमुना कुले लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस भये देख रवि उदय मानो कमल फूले करत गुंजार मुरली झूले सांवरो सुनत व्रज वधु तन सुध जो भूले। चतुर्भुज दास श्री यमुने प्रेम सिंधु में लाल गिरिधर नवर हरखी झूले। पद 15 वारंवार श्री यमुने गुणगान कीजे यही रस नाते भजो नाम रस अमृत भाग्य जाके है सोई जो पीजे भानु तनया दया अति ही करुणामया इनकी कर आस अब सदा ही जीजे चतुर्भुज दास कहे सोई प्रिय पास रहे जोई श्री यमुना जी के रस जो भींजे। पद 16 हित करी देत श्री यमुने वास कुंजे जहाँ निश्वास रास में रसी कवर कहाँ लो बरानिए प्रेम पूंजे थकित सरिता नीर थकित व्रज वधु भीर को न धरत धीर मुरली सुनीजे चतुर्भुज दास यमुने पंकज जानी मधुपकी नाई चित लाय गुंजे। पद 17 भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी छांडी निज धाम विश्राम भूतल कियो प्रकट लीला दिखाई जो तैसी परम परमार्थ करत है सबन को देत अद्भुत रूप आप जैसी नंददास यों जानी दृढ़ करी चरण गहे एक रसना कहा कहो विशेषी। पद 18 नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के तहाँ ते अति ही आतुर जुधाई जाके मन जैसी इच्छा हती ताही की तैसे ही आय साध जो पुजाई नंददास प्रभु तापर रिझी रहे जोई श्री यमुना जी को जस जुगाई। पद 19 ताते श्री यमुने जुगाओ शेष सहस्त्र मुख निश दिन गावत पार नहीं पावत ताही पाओ सकल सुख देनहार ताते करो उच्चार कहत हो वारंवार जिन भुलाओ नंददास की आस श्री यमुने पूरन करी ताते घरी घरी चित्त लाओ। पद 20 भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जो देई बात लौकिक तजो पुष्टि यमुने भजो लाल गिरिधर नवर तब मिले भगवतीय संग कर बात इनकी लहे सदा सानिध्य रहे केली में नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे ताको श्री यमुने सदा बस जो है। पद 21 नाम महिमा ऐसी जो जानो मर्यादा अधिक कहे लौकिक सुख लहे पुष्टि को पुष्टि पथ निश्चय जो मानो स्वाति जल बूंद जब परत है जाही में ताही में होत तैसो जुबान श्री यमुने कृपा सिंधु जानी स्वाति जल बहु मानी सूर गुण पूर कहाँ लो बखानो। पद 22 भक्त को सुगम श्री यमुने अगम ओरे प्रातः ही नाद अघ जात ताके सकल यमहु रहत ताही हाथ जोरे अनुभवी बिना अनुभव कहा जा नहीं जाको पिया नहीं चित्त चोरे।
प्रेम के सिंधु को मरम जान्यो नहीं, सुर कहे कहा भयो देह बोरे। पद 23 फल फलित होय फल रूप जाने, देखी हो ना सुनी ताही की आपुनी, कहू की बात को कैसे जो माने, ताही के हाथ निरमोल नग दीजिए, जोई निके करी परखी जाने। सुर कहे क्रूरते दूर बसिए सदा, श्री यमुना जी को नाम लीजे जो छाने। पद 24 श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे, भगवती को भगवत संग मिली रहत है, जाके ही ये बसत प्राण प्यारे। गूढ़ श्री यमुने बात सोई अब जा नहीं, जाके मनमोहन नैन तारे, सुर सुख सार निर्धारवे पावही, जा पर होई श्री वल्लभ कृपारे। पद 25 श्री यमुने रस खान को शीश नाऊं, ऐसी महिमा जान भक्त को सुख दान, जोई मांगो सोई झुपाऊं, पतित पावन करन नाम लीनो तरन, दृढ़ कर गही चरण कहूं न जाऊं। कुंभन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत, यही चाहत नहीं पलक लाऊं। पद 26 श्री यमुने अगणित गुण गिने न जाए, यमुने तट रेणुते होत है नवीन तनु, इनकी सुख देन की कहाँ करो बड़ाई, भक्त मांगत जोई देत तिही छीनु, सो ऐसी को करे प्रण निभाई। कुंभन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत, कहो कैसे करी मन अघाई। पद 27 श्री यमुने पर तन मन धन प्राण वारो, जाकी कीर्ति विशद कौन अब कही सके, ताही नैनंते न नेकटारो, चरण कमल इनके जू चिंतत रहो, निश दीना नाम मुखते उच्चारो। कुंभन दास कहे लाल गिरिधरन मुख, इनकी कृपा वही तब निहारो। पद 28 भक्त की इच्छा पूर्ण श्री यमुने जो करता, बिना मांगे हु देत, कहा लो कहो हेत, जैसे काहू को होय धरता। श्री यमुना पुलिन रास, व्रज वधु लिए पास, मंद मंद हास कर मन जो हरता। कुंभन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत, यही जिय लेखत श्री यमुने जो भरता। पद 29 रास रस सागर श्री यमुने जो जानी, बहत धारा तन प्रति छीन नौतन, राखत अपने उर्मे जुठानी, भक्त को सहे भार देत जू प्राण आधार, अति ही बोलत मधुर मधुर बानी। श्री विठल गिरिधरन वर बस किए, कौन पे जात महिमा बखानी। पद 30 भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, अपने रस रंग में संग राखत सदा, सर्वदा जो श्री यमुने नाम उच्चारे, इनकी कृपा अब कहाँ लग बरनीय, जैसे राखत जननी पुत्र बारे। श्री विठल गिरिधरन संग विहरत, भक्त को एक छीनु ना बिसारे। पद 31 कौन पे जात श्री यमुने जो बरनी, श्रीनाथ जी सबही को मन मोहत मोहन, सो पिया को मन हे जो हरनी, इन बिना एक चिन रहत नहीं जीवन धन, ब्रजचंद मन आनंद करनी। श्री विठल गिरिधरन सहित आए, भक्त के हेत अवतार धरनी। पद 32 श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी, इनके स्वरूप को सदा चिंतन करत, कलन परत जाय लेह लागी। पोष्टि मार्ग मरम अति ही दुर्लभ, करम छांड सगरे परम प्रेम पागी। श्री विठल गिरिधरन ऐसी निधि, भक्त को देत है बिना मांगी। पद
33 श्री यमुने के नाम अघ दूर भाजे, जिनके गुण सुनन को लाल गिरिधरन पिय, आय सन्मुख ताके बिराजे, तिहि छिनो काज ताके सगरे सरे, जाय के मिलत व्रज वधु समाजे। कृष्णदासनी कहे ताही अब कौन डर, जाके ऊपर श्री यमुने सी गाजे। पद 34 श्री यमुना जी को नाम तेई झूले है, जाकी लगन लगी नंदलाल सो, सर्वस्व दे के निकट रहे हैं, जिन्हीं सुगम जानी बात मन में जुमानी, बिना पहचानी कैसे जुपइए। कृष्णदासनी कहे श्री यमुने नाम नौका, भक्त भव सिंधु ते यूं ही तरिए। पद 35 श्री यमुने तुमसी एक होजू तुम ही, करी कृपा दरस निश्वासर दीजिए, तिहारे गुणगान को रहे उद्यम ही, तिहारे पायते सकल निधि पावही, चरण कमल चित्त भ्रमर भ्रमही। कृष्णदासनी कहे कौन यह तप कियो, तिहारे ढींग रहत है लता द्रुमही। पद 36 ऐसी कृपा कीजिए लीजिए नाम, श्री यमुने जगवंदनी गुणन जात काहुगिनी, जिनके ऐसे धनी सुंदर श्याम, देत संयोग रस ऐसे पियु है जुबस, सुनत तिहारो सुजस पूरे सब काम। कृष्णदासनी कहे भक्त हित कारणे, श्री यमुने एक छिनो नहीं करे विश्राम। पद 37 श्री यमुने के साथ अब फिरत है नाथ, भक्त के मन के मनोरथ पूरा न करत, कहा लो कहिए इनकी जुगाथ, विविध श्रृंगार आभूषण पहरे, अंग अंग शोभा बरनी न जात, दास परमानंद पाय अब व्रज चंद, राखे अपने शरण बहे जो जात। पद 38 श्री यमुने की आस अब करत है दास, मन कर्म वचन कर जोरी के मांगत, निश दीना राखिए अपने जुपास, जहाँ पिय रसिक वर रसिक निराधिका, दो जन संग मिल करत है रास, दास परमानंद पाए अब व्रज चंद, देखी सीरा ने नैन मंद हास। पद 39 श्री यमुने पिय को बस तुम झुकीने, प्रेम के फंदते ग्रही जु राखे निकट, ऐसे नीर मोल नग मोल लीने, तुम जो पठावत तहाँ अब धावत सदा, तिहारे रस रंग में रहत भीने, दास परमानंद पाए अब व्रज चंद, परम उदार श्री यमुने जो दान दीने। पद 40 श्री यमुने सुख कारणी प्राणपति के, जिन्हें भूली जात पिय तिन्हें सुधी करी देत, कहा लो कहिए इनके जुहित के, पिय संग गान करे उमंगी ज्यो रस भरे, देत तारी कर लेत झटके, दास परमानंद पाई अब व्रज चंद, यही जानत सब प्रेम गति के। पद 41 शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धिनी, देत पति पंथ पिय कंथ सन्मुख करत, अतुल करुणामयी नाथ अंग अर्धिनी, दीन जन जान रस पुंज कुंजेश्वरी, रमत रस रास पिय संग नेश शरदनी, भक्तिदायक सकल भव सिंधु तारिणी, करत विध्वंस जन अखिल अघमर्दिनी, रहत नंद सुनु तट निकट निश दीन सदा, गोप गोपी रमत मध्य रस कंदनी, कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, कृष्ण लीलामयी कृष्ण सुख कंदनी, पद्मजा पायतु संग ही मुररिपु, सकल सामर्थ्यमयी पाप की खंडनी, कृपा रस पूर्वै कोठ पद की सीढ़ी, जगत विख्यात शिव शेष शीर मंडनी, पर्य पद कमल तर और सब छांड के,
દેખ દ્રગ દ્રઢ કર દયા હાસ્ય મુખ મંદની ઉભય કર જોર કૃષ્ણ દાસ વિનંતી કરે કરો અબ કૃપા કલિંદ ગિરી નંદિની કરો અબ કૃપા કલિંદ ગિરી નંદિની કરો અબ કૃપા કલિંદ ગિરી નંદિની. પદ 42 દીન જાન મોહી દીજે શ્રી યમુનાજી नंद कुमार सदावर मांगो गोपीन की दासी मोहि कीजे तुम तो परम उदार कृपा निधि चरण शरण सुखकारी तिहारे वश सदा लाडीली वर्तत तुम तट क्रीडत गिरधारी सब व्रजजन विहरत संग मिल अद्भुत रास विलासी तिहारे पुलिन निकट कुंजन द्रुम कोमल शशि सुवासी ज्यो मंडल में चंद बिराजत भर भर छीरकत नारी श्रम जल हसत नात अधिरस भर जल क्रीड़ा सुखकारी रानी जो के मंदिर में नित्य उठ पाय लाग भुवन काज सब कीजे परमानंद दास दासी वे नंद नंदन सुख दीजे. पद 43 दो कुल खंभ तरंग सीढ़ी श्री यमुना जगत वैकुंठ निशरनी अति अनुकूल कलोलन के भर लिए जात हरि के चरणन सुख देनी जन्म जन्म के पाप दूर कर काटत कर्म धर्म धार पेनी चित स्वामी गिरिधर झुकी प्यारी सांवरे अंग कमल दल नैनी. पद 44 मेरे कुल कलुमश सब ही नाशे देख प्रभात प्रभाकर कन्या वे देखो पाप जात जितति तते ज्यो मृगराज देख मृग सन्या पोषत दे पय पान पुत्र लो हे जग जननी धन्य सुधन्या दियो चाहे गदाधर हुको चरण कमल निज भक्ति अनन्या. पद 45 अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुखावगाहन अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुख अवगाहन नवी दीत राजत अति तरणी नंदनी श्याम वरण झलक रूप लोल लहर पर अनूप सेवित संतति मनोज वायु मंदिनी कुमुद कंच वन विकास मंडित दिश दिश सुवास कुजत अली हंस कोक मधुर छंदिनी प्रफुल्लित अरविंद पुंज कोकिल कलसार गुंज गावत अली मंजू पुंज विविध वंदनी नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरत आस चाहत पुलिनवास सकल दुख निकंदिनी नाम लेत कटत पाप मुनि किन्नर ऋषि कलाप करत जाप परमानंद महा आनंदिनी. पद 46 प्रफुल्लित वन विविध रंग चलकत यमुना तरंग सौरभ घन आमोदित अति सुहावनो चिंतामणि कनक भूमि छवि अद्भुत लता झूमी शीतल मंद अति सुगंध मरुत आवतो सारस हंस शुक चकोर चित्रित नृत्यत सुमोर कल कपोत कोकिला कल मधुर गावनो युगल रसिकवर विहार परमानंद छवि अपार जयति चारु वृंदावन परम भावनो. पद 47 अधम उदारनी में जानी श्री यमुना जी अधम उदारनी में जानी गोधन संग श्याम घन सुंदर तीर त्रिभंगी दानी गंगा चरण परसते पावन हर शिर चिकुर समानी सात समुद्र भेद यम भगिनी हरि नख शिख लपटानी रास रसिक मणि नृत्य परायण प्रेम पुंज ठकुरानी आलिंगन चुंबन रस विलसत कृष्ण पुलिन रजधानी ग्रीष्म ऋतु सुख देत नाथ को संग राधिकारानी गोविंद प्रभु रवि तनया प्यारी भक्ति मुक्ति की खानी. पद 39 श्री यमुना जी यह प्रसाद हो पाऊं तिहारे निकट रहो निश्वास
राम कृष्ण गुण गाऊं। मज्जन करो विमल जल पावन, चिंता कलेश बहाओ। तिहारी कृपा ते भानु की तनया, हरिपद प्रीति बढ़ाओ। विनती करो यही वर मांगो, अधमन संग विसराओ। परमानंद प्रभु सब सुख दाता, मदन गोपाल लड़ाओ। पद 49 यह यमुना गोपाल ही भावे। यमुना यमुना नाम उच्चारत, धर्मराज ताकी न चलावे। जे यमुना को जान महात, वारंवार प्रणाम करे। ते यमुना अवगाहन मज्जन, चिंतित ताप तन के जुहरे। पद्म पुराण कथा यह पावन, धरणी प्रति वाराह करी। तीर्थ महात्म्य जान जगत, गुरु सो परमानंद दास लहे। पद 50 श्री यमुना जी पतित पावन करे। प्रथम ही जब दियो दर्शन, सकल पातक हरे। जल तरंग परस कर, पय पान सो मुख भरे। नाम सुमरत गई दुर्मति, कृष्ण जस विस्तरे। गोप कन्या कियो मज्जन, लाल गिरिधर वरे। सूर श्री गोपाल सुमरत, सकल कारज सरे। पद 51 श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे। तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे। श्री गोकुल के निकट बहत हो, लहरन की छवि आवे। सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी, जे जन प्रात उठ नावे। मदन मोहन जो की खरी रे प्यारी, श्री पटरानी जो कहावे। वृंदावन में रास रच्यो है, मोहन मुरली बजावे। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, वेद विमल यश गावे। पद 52 तिहारो दरस हो पाऊं, श्री यमुना जी तिहारो दरस हो पाऊं। श्री गोवर्धन श्री वृंदावन, ब्रज रज अंग लगाऊं। दिन 10-5 रहो श्री गोकुल, ठकुरानी घाट हो नाऊं। दासन के ऊपर करो कृपा, संतन के संग आऊं। पद 53 श्री यमुना जी की महिमा, मोपे वर्णी न जाई। श्री यमुना जी की महिमा, मोपे वर्णी न जाई। सुर सुता घनश्याम वरण, प्रफुल्लित रूप निकाई। श्री हरि गोप वधु द्विज सब, श्री गोकुल के लड़काई। प्रजाधीश प्रभु आदि भक्तन को, सकल सिद्धि सुखदाई। पद 54 श्री यमुना जी तुम सम और न कोई। करो कृपा मोहि दीन जान के, निज व्रजवासो होई। राखो चरण शरण तरणी तनया, जन्म आपदा खोई। यह संसार स्वार्थ को सब विध, सुत बंधु सगो न कोई। प्रेम भजन में करत विघ्नता, संत संतापे सोए। ताको संग मोहि सपने न दीजे, मांगो नयन भर रोए। गरल पान डारत अमृत में, विषया रस समोए। रसिक कहे दिन होय मांगो, लहर समुद्र समोए। पद 55 श्री यमुना यमुना नाम भजो। श्री यमुना यमुना नाम भजो, हर खत करो आराधन इनको, और को पंथ तजो। देह सकल पदार्थ तुमको, इनके नाम रजो। व्रजपति की अति ही जो प्यारी, तातेश सकल श्रृंगार सजो। पद 56 निरखत ही मन अति आनंद भयो। निरखत ही मन अति आनंद भयो, देख प्रभात प्रभाकर कन्या, जल परसत ही सकल अघ भाजे। ज्यों हरि देख हरण की सैन्य, और जीवन को औरन की गति, मेरी गति हो तुम ही अनन्या। व्रजपति की तुम अति ही प्यारी,
तुम संगम ते जानवी धन्या। पद 57। श्री यमुना से नहीं कोई दुख हरनी। श्री यमुना से नहीं कोई दुख हरनी, जाके स्नान ते मिटत है पाप, होत है आनंद सुख की जो करनी। महिमा अगाध अपार, इनके गुण वेद पुराण न वर्णी। कहत व्रजपति तुम सबन को समझाए, छोटे यम डर जो आवे इनकी शरणी। पद 58। श्री यमुनाजी तिहारो पुलिन मोहि भावे। तिहारो पुलिन मोहि भावे, श्री यमुनाजी तिहारो पुलिन मोहि भावे। सुर ब्रह्मादिक ध्यान धरत है, सो सुपने नहीं पावे। बीच बीच कुंज सदन अति सुंदर, श्यामा श्याम सुहावे। चहु दिश सकल फूल अति फूले, गुहि गुहि कंठ धरावे। कुसुमन के विजना जो संवारे, सखियन बाह डुरावे। सूरदास प्रभु सब सुख सागर, दिन दिन शोभा पावे। पद 59। जयति भानु तनया, चरण युगल वंदे। जयति भानु तनया, चरण युगल वंदे। जयति व्रजराज नंद प्रिय सर्वदा, देत आनंद ज्यो शरद चंदे। जयति सकल सुखकारिणी, कृष्ण मन हारिणी। श्री गोकुल निकट वहत मंदे, जाके तट निकट हरि रास मंडल रच्यो। तहा नृत्यत ताता थई थंदे। जयति कलिंद गिरी नंदिनी, देत आनंदिनी। भक्त के हसत सब दुख द्वंद्वे। चित्त में ध्यान धर मुदित व्रजपति कहे, जयते यमुने जयते नंद नंदे। पद 60। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल, विनती करत तुरत सुनी लीनी। भये मोपे दयाल, को जो को मज्जन करत निरंतर। ताते डरपत है यमकाल, ब्रजपति की अति ही प्यारी। कालिंदी सुमिरत होत निहाल। पद 61। श्री यमुना जी यह विनती चित्त धरिए। श्री गिरधर लाल मुखार विंदरती, जन्म जन्म नित करिए। विष सागर संसार विषम संगते, मोहि उद्धरिए। काम क्रोध अज्ञान तिमिर अति, उर अंतरते हरिए। तिहारे संग बसो निज जन, संग रूप देख मन ठरिए। गाऊ गुण गोपाल लाल के, अष्ट व्याधि ते डरिए। त्रिविध दोष हर के कालिंदी, एक कृपा कर ढरिए। गोविंदास यही वर मांगो, तिहारे चरण कमल अनुसरिए। पद 62। नमो तरणी तनया, परम पुनित जग पावनी। कृष्ण मन भावनी, रुचिर नामा। अखिल सुखदायिनी सब सिद्धि हेतु, श्री राधिका रमण रति करण श्यामा। विमल जल सुमन कानन मोदयुत, पुलिन अति रम्य प्रिय व्रज किशोरा। गोप गोपी नवल प्रेम रति वंदिता, तट मुदित रहत जैसे चकोरा। लहरी भाव लालित बालुका सुगम, व्रज बाल वृत पुरण रास फलदा। ललित गिरिवर धरण प्रिय कलिंद नंदिनी, निकट कृष्णदास विहरत प्रबलदा। पद 63। पिय संग रंग भर कर विलासे, सुरत रस सिंधु में अति हरखित भई। कमल ज्यों फूलते रवि प्रकाशे, तनते मनते प्राणते सर्वदा। करत है हरि संग मृदुल हासे। कहत व्रजपति तुम सबन को समझाए, मीटे यम त्रास इन्हीं उपासे। पद 64। जयति श्री यमुने प्रकट कल्पलति के। जयति श्री यमुने प्रकट कल्पलति के, अष्टविध सिद्धि अद्भुत वैभव सकल। स्वजन विख्यात स्वाधीन पति के, केली श्रम सुरत पय रूप। व्रज भूप को
पुत्र पयपान दे विश्व माता, अंग नूतन करत पुष्टि तब अनुसरत, त्रिदल रस केली की अमित दाता, रहत यम द्वार ते मुक्त सुख चारते, नाम त्रय अक्षर उच्चार कीने, उभय लीला विष्ट व्रज प्रिय कुमारिका, तुर्य प्रिया वदत रस रंग पीने, अनावृत ब्रह्म ते सदावृत वे रही, कनक शाखा विटप श्याम वल्ली, सदा प्रफुल्लित द्वारिकेश अवलोक के, नित्य आनंद आभीर पल्ली। पद 65। हम लई शरण श्याम यमुना की, तिहारे चरण मैया लगोरी ध्यान। हम लई शरण श्याम यमुना की, तिहारे चरण मैया लागोरी ध्यान। माता तिहारी संज्ञा, तारन पिता तिहारे सूरज भानु, धर्म राय से बंधु तिहारे, पति तिहारे श्री भगवान। ऊंचे नीचे पर्वत कहिए, पर्वत राय पाषाण, सात समुद्र भेद के निकसी, ऐसी है श्री यमुने जी बलवान। ब्रह्मा जा को ध्यान धरत है, पंडित वांचत वेद पुराण, जोगी जति सती सन्यासी, मग्न भये तिहारे गुणगान। जैसे तुरंग चलत धरणी पर, तैसे भवरा करत गुंजार, सूर श्याम आधीन तिहारे, जग जननी मैया करनी कल्याण। पद 66। जय जय श्री सूरजा कलिंद नंदिनी, जय जय श्री सूरजा कलिंद नंदिनी, गुल्मलता तरु सुवास कुंज, कुसुम मोदमत, गुंजत अली सुभग पुलिन वायु मंदिनी, हरि समान धर्मशील कांति, मंजुल जलद नील, कटि नितंब भेद तनित गति उतंगिनी, सिकता जनु मुक्ता फल कंकण युत भुज तरंग, कमल उपहार लेत पिया चरण वंदिनी, श्री गोपेंद्र गोपी संगम, श्रम जलकण सिकत अंग, रति तरंग निरख रस सुफंदिनी, चित स्वामी श्री गिरिवर धरन, नंद नंदन आनंद कंद, श्री यमुने जन दुरित हरण, दुख निकंदनी। पद 67। जय जय श्री यमुना आनंद कंदनी, जय जय श्री यमुना आनंद कंदनी, दरश परश त्रिविध ताप जार, दुख निकंदनी, अंग अंग छवि तरंग शोभा सिंधुनी, ताहि के अघ कुठार जाके वंदिनी, अक्षय आनंद गोविंद अगम गामिनी, हरिदास तट निवास जन्म जन्मनी। पद 68। बलवामन हो जग पावन करण, कही न परत शोभा नील मणि न किसी, शोभा मगन भयो जब सुंदर चरण, बन्यो है भेद अति उतते, गंगा की धार धसी, हे धरणी उज्जवल वरण, इतते पदसी ज्योति मानो कालिंद की धार, चढ़ी है अमरपुर पाप हरण, रहे हैं चकित चाही सुर नर मुनिवर, दुहुदिश नेह आन किए वरण, नंद दास जाके चरित्र दुरित हरण, रंचक श्रवण मीटे जन्म मरण। पद 69। श्री यमुने करुणामयी विनती सुन लीजे, श्री यमुने करुणामयी विनती सुन लीजे, दर्शन ते पावन सदा स्मरत अगछीजे, मज्जन तुव जल पावनी मन सुध कर लीजे, श्री विठ्ठल गिरिधरन के गाँव गुण रस भींजे। पद 70। तपत मिटे देखे भान सुताते, स्नान किए ते कलिमल नासे, गान किए ते ज्ञान होय ताते, तपत मिटे देखे भान सुताते, पान किए ते प्रेम प्रकाशे, ध्यान धरे ते दंपति दे ताते, तीर बसे बलवीर ही आवे, वृंदावन वैभव लहताते, ब्रजभूषण से प्रभु जान के, दुख न होए कोई छिनताते, प्रसन्न होए यमुना जगतरणी, नंद दास जाचत है ताते। पद 71। अघसहारिणी श्री यमुना जी, पुराण पुरुषोत्तम जी की प्यारी,
जे जनता की चरणन चित लावत ता पर कृपा अनुग्रह भारी। 16 सहस्र राजकन्यान के प्रतिबंधक मुर दैत्य महारी। ताहि निहार किए अंगीकृत पाणी गहे सबके जू मुरारी। ऐसे प्रभु सो केली निरंतर चरण रेणु फरकत सुखकारी। सेवा योग्य देह के कारण करत दया निज प्राण आधारी। चमकत रेणु संबंध करत जो सिद्ध अलौकिक देह सुखारी। हरिदास यमुना जी की शोभा निरखत ही तन मन धनवारी। पद 72 सोहत यमुना फल फूलन। सोहत यमुना फल फूलन रास रमण कीनो व्रज नायक यह वन यमुना कूलन। मोहन कियो रूप मोहनी को असुर रहे मति भूलन। हरिदास प्रभु शोभा निरखत यही यमुना भुज मूलन। पद 73 सब हिनते यमुना अधिकिरी। अरे श्रीनाथ जी, सब हिनते यमुना अधिकिरी किहि कारण भूतल पाँवधारी। चित दे सोनी सब या विध कीरी। व्यापी वैकुंठ ते आई व्रज में को जाने सखिया निधि कीरी। हरिदास प्रभु निरखत रंक मिली गठिया या निधि कीरी। पद 74 देवी यमुने नमो देवी यमुने। देवी यमुने नमो देवी यमुने मन वचन कर्म कर शरण तेरी। सकल सुखकारिणी भव सिंधु तारिणी दरसते कटत है पाप वेरी। भक्त वरदायिनी भक्त मन भाविनी भक्त सहायिनी भक्त भेरी। दीजिए भक्ति अब लाल गिरिधरन की काटिए विषय कृष्ण दास केरी। पद 75 नमो नमो जयति श्री यमुने। नमो नमो जयति श्री यमुने जय कालिंदी पुलिन मनोहर श्यामा श्याम करत है रवने। जल क्रीड़ा करत तेरे तट तुम समको नहीं तीनो भवने। सुर नर मुनि के ध्यान न आवे सो प्रभु तिहारे गृह गवने। तुम तो परम कृपाल जग जननी पतितन को पावन भवतरणी। शाखा निगम पुराण नवरणी सुर प्रभु के मन को हरणी। पद 76 जय जय श्री यमुने मात जगत वंदिनी। जय जय श्री यमुने मात जगत वंदिनी त्रिविध ताप दूर करत पाप खंडिनी। सकल व्रज भूमि विहार कलिंद नंदिनी चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन लाल काम कंदनी। पद 77 जय यमुने जननी महारानी। जय यमुने जननी महारानी शेष सनकादि नारद गुण गावत। चतुरानन मुख वेद बखानी। शुक मुनि आदि पराशर के सुत ध्रुव को दई अटल राजधानी। चतुर्भुज प्रभु गिरिधर इन के वश केली कला रस रूप की खानी। पद 78 प्रात समय रसना चूरटिए कलिंद सुता हरि के सुख देनी। सांवरे अंग तरंग अनंगनम मोती न मांग भरी मृग नयनी। हाव भाव विलोकन में मन मोहन के मन को हर लेनी। प्रेम कहे जग पावनी भूतल माज वैकुंठ निश्रेणी। पद 79 कालिंदी तू कृष्ण जो की प्यारी। कालिंदी तू कृष्ण जो की प्यारी जैसी कृपा करत हरि हम पर ऐसी तुम जो राखत ही न्यारी। जमुना जल विलास चहुदिश ज्यों बैठी सब हिन की महतारी। सूरदास ही लगन मन की कहा कहू कुल प्रकृति तिहारी। पद 80 जग में ऐसी सार भज तू वारंवार। जग में ऐसी सार भज तू वारंवार। श्री यमुना जी को नाम जपत निश दिन ताते उतरे भवसागर पार। जैसे हरि भजे ते हरि हिय में बसे करे कृपा सर्वदा अपने पति मार। कहत व्रजपति तुम सबन को समझाए पर योइन की शरण और नहीं आधार।
પદ 81મો કાલિંદી કલી કલ્મશ હરણી, કાલિંદી કલી કલ્મશ હરણી, યમાનુજા શ્યામા મહાસુંદરી ગોવિંદ ધરણી. જય યમુના જય કૃષ્ણ વલ્લભા, પતિતન કો પાવન ભવતરણી. શરણાગત કો દેત અભય, પદ જનની કરત જૈસે સુત કી કરણી. શીતલ મંદ સુગંધ સુધા નિધિ, ધારાધરી વપુ ઉતરી ધરણી. પરમાનંદ કહે પરમ પાવની, જુગ જુગ સાખ નિગમનિત વરણી. પદ 82મો શ્રી યમુનાજી નિરખત સુખ ઉપજત, શ્રી યમુનાજી નિરખત સુખ ઉપજત. સન્મુખ વૃંદા વિપિન સુહાય, શ્રી વિશ્રાંત શ્રી વલ્લભ જુકે બેઠક, નિર્મલ જલ યમુના કે નહાય. ભુજ તરંગ સોહત અતિ નીકે, ભવર કંકણ સિરાય. વ્રજપતિ કેલી કહા કવિ વરણે, શેષ સહસ્ર સુખ પાર ન પાય. શ્રમ જલ સહિત અગાધ મહારસ, લીલા સિદ્ધુ તરંગન છાય. સકલ સિદ્ધિ અલૌકિક દાતા, જે જનતા કી ચરણન ચિત લાય. રવિ મંડલ દ્વારા હોય પ્રકટી, ગિરી કલિંદ શિરતે વ્રજધાય. હરિદાસ પ્રભુ શોભા નિરખત, મન કર્મ વચન ઇનકે ગુણ ગાય. પદ 83મો કેલી કલોલન દેખ યમુને, કેલી કલોલન દેખ યમુને, નંદ નંદન કુંવર કેલી રસમતહી, સુંદરી સંગલે સુભગ ભવને. અધર મધુપાન કરત સુરત, રસદાન કર પિય પ્યારી નિત કરત રવને. તાહી સમે રસ ભરી, ભાનો તનયા ખરી, પ્રેમાનંદ મેં કરત ગવને. પુણ્ય પૂર્ણ ફલે સકલ જન કેસરે, તાહી હિત ભૂતલ યમુને અવને. જુગ જોડી શોભા હરિદાસ નિરખ, દુહ કર જોર કરત નમને. પદ 84મો આજ આનંદ में સુરતનયા સુભગ, આજ આનંદ में સુરતનયા સુભગ. શ્યામ સુંદર સંગ કેલી ઠાની, મધુર મુસ્કાન અરસાન રસમગ્ન મન. કરત કોકિલ શબ્દ મધુરી બાની, વહત ગોકુલ પાસ કરત પૂર્ણ આસ. સકલ સામર્થ્ય જન અભયદાની, નંદ નંદન કુંવર નવલ જોરી. હરિદાસ પ્રભુ નિરખ શોભા બખાની. પદ 85મો નિરખો શ્રી યમુના સુખદાયક, નિરખો શ્રી યમુના સુખદાયક. સબત જ આસ ગહુ ઇનકી, મન કર્મ અરુ ભજવાચક. લહેર તરંગ બઢત જ્યો ઇનકી, ત્યો હરિ સ્નેહ બઢાયક. અતિ ઉદાર કલિંદ નંદિની, નિજ રસ સર સહાયક. શેષ સહસ્ર મુખ પાર ન પાવે, કો કવિ વર્ણન લાયક. હરિદાસ પ્રભુ શોભા નિરખત, પ્રિય પદ પ્રીતિ સહાયક. પદ 86મો શ્રી યમુના મોહન કો મન મોહે, શ્રી યમુના મોહન કો મન મોહે. જ્યો પ્રભુ ધર્યો સ્વરૂપ મોહિની, ત્યો શ્રમ સલિલ સોહે. હોત સહાય સબન કો નિષદિન, કેલી કરત પ્રભુ જો હે. હરિદાસ પ્રભુ શોભા નિરખત, વર્ણન કરે કવિ કો હે. પદ 87મો ભાનુ સુતા ગુણ ગાવે પ્રેમ ભરી, ભાનુ સુતા ગુણ ગાવે પ્રેમ ભરી. સોઈ અલૌકિક સિદ્ધિ જો પાવે. યમુના તટકિત હરી લીલા, પરમ કૃપા કરી દર્શ છુપાવે. અનુભવ હોત લીલા રસ કો, તબ અરુ સર્વાત્મક ભાવ હિ આવે. હરિદાસ પ્રભુ શ્રમ સરિતા, નિરખ નયન ચિત્ત જીન વિસરાવે. પદ 88મો श्री यमुना जी की रेणु ऐसी, सकल जीवन के दोष निवारे. तेहु रेणु बहुत है भीतर, जा पर से सब पाप निवारे. हरिसो विहार करत रज सुंदरी, तीन चरण की रेणु सुतारे. हरिदास यह शोभा निरखत, श्री यमुना चित रहो हमारे. पद 89मो श्री यमुना जी रेणु बहुत तुव माई, श्री यमुना जी रेणु बहुत तुव माई. ताकि महिमा कहाँ लगे बरनो, रसना कोटिक नाही. वृंदावन स्थित दो करारे, फूल सुमन न जलप नाई. हरिदास प्रभु शोभा निरखत,
ચિત્ત અરુજ્યો તેહી થાય. પદ 90. શ્રી યમુનાજી સોહત મન મોહિની. શ્રી યમુનાજી સોહત મન મોહની, સુર અસુર મિલ પૂજા કીની, તૈસી લાગત સોહની. યા તે યહ દ્રષ્ટાંત જુદીનો, ભાવ અનેક દિખોહની. હરિદાસ શોભા ચિત અરુજ્યો, લાગી ચરણન ગોહની. પદ 91. કરી પ્રણામ યમુના જલ લહીએ, શ્રી વલ્લભ પદ રજ પ્રતાપતે, શ્રી યમુના મુખ કહીએ. પુરાણ પુરુષોત્તમ વ્રજ પ્રકટે, ઇનહુ પ્રકટ્યો ચહીએ. જો જન લક્ષ ધરા તે ઊંચો, રવિ મંડલ તે બહીએ. નંદ સુવન અરુ કલિંદ નંદિની, દર્શન રિપુ તન દહીએ. હરિદાસ પ્રભુ યહ સુખ શોભા, નયન હી મેં રહીએ. પદ 92. ગિરી કલિંદ પર જલજુ પરે. ગિરી કલિંદ પર જરજુ પરે, તાતે ઉઠત પ્રવાહ ફેન में उज्ज्वलता जो भरे. सहज स्वरूप प्राण प्यारी को उज्ज्वल क्यों चु करे. हरिदास शोभा पिय कारण सहज श्रृंगार धरे. पद 93. श्री यमुनाजी पिय के पास चली. श्री यमुनाजी पिय के पास चली, यह विलास गिरी चढ़ी, पुनि उतरत अति जुभली. उछलत है प्रवाह वेगते, ऊंची यह जो अली. हरिदास शोभा नित निरखत, आतुर उमंग रली. पद 94. चलत न्यारी नवल यमुने. चलत न्यारी नवल यमुने, गाय व्रज भक्त के भाव को, देखी के भाव सहित तहाँ करत गवने. आई व्रज भूप प्रिय भाव उपजावही, चल स्थल सिद्ध दो करत रमने. निरख शोभा हरिदास निषदिन यह, मन कर्म वचन करि शीश नमने. पद 95. यह रस रूप है भानु की नंदनी. यह रस रूप है भानु की नंदनी, कंज रस रूप के मित्र की यह सुता. देत रस दान करी दूर दुख द्वंद्वनी. गुढ़ रस रीत के भाव कैसे कहो, नंद नंदन विरह ताप निकंदनी. निरख शोभा हरिदास नयन सदा, राखिए निकट मोहि जगत की वंदनी. पद 96. श्याम वरण श्री यमुना जी की, श्याम वरण समतुलरी. श्याम वरण श्री यमुना जी की, श्याम वरण समतुलरी. तव प्रण मेघ घटा ज्यो उमगी, सबहीन की सुख मुलरी. ध्रुव वे को मधुवन यमुना तट, गई दुखन की सुलरी. हरिदास प्रभु शोभा निरखत, गई भव वेदन भूलरी. पद 97. श्रम सरिता तू जे जन नित्य प्रति. श्रम सरिता तू जे जन नित्य प्रति, करत तू गुण गानरी. कृपा सिंधु सोता ही मिलावो, यही तुम्हारी है बानरी. कृपा जलदे पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण प्रकट प्रमाणरी. निश दिन मिली रहत तिन सौही, तुम हो रस की खानरी. ऐसे प्रभु सो हम ही मिलावो, विनती सुन धर कानरी. सब ही नते मुख्य श्री गंगा, तिनहु ते अधिक कहानरी. तुम्हारे मिले महिमा अति बाढ़ी, सो सब सुन हो सुजानरी. हरिदास प्रभु शोभा निरखत, हिये वसो यह ध्यानरी. पद 98. यमुना तीर पर तरंग फेलत जबे. यमुना तीर पर तरंग फेलत जबे, मानहु कर कमल पर भमरी है कंकण. प्रभु कटी रूप तट निरख ठाडे प्रिया, थाम के यमुने तहाँ भरत है अंकन. अति शोभित खरी विविध भूषण भरी, श्याम तन चितवन यमुने दग बंकन. रेणु मुक्ता पास परे, पोई कंकण करे हरिदास. शोभा निरख पाए निधि रंकन. पद 99. अनंत गुण भूषिते प्रभाकर नंदनी. अनंत गुण भूषिते प्रभाकर नंदनी, सकल गुण वांछित है प्रभु समाने. ध्रुव को अचल राज और वांछित फल, सोई सब देन को अदेय दाने. शिव विरंचादि सब देव स्तुति करे,
અરુનારદાદી મુનિ કરત ગાને, યમુને મોહી પ્રાણપતિ બેગી મિલાવો, હરિદાસ પ્રભુ નિરખત શોભા બખાને. પદ 100 વિશુદ્ધ મથુરા તટે યમુને તુમ વાસ હૈ, विशुद्ध मथुरा तटे यमुने तुम वास है, दिवस में गोप लीला सहित निशा में नाथ, व्रज भक्त सब पास है. आई निज धाम ते काम पूरे सखे, और वृंदा विपिन कियो प्रभु रास है. तिन्हि सो बेग हम ही मिलावो प्रिय, निरक हरिदास शोभा यही आस है. पद 101 श्री यमने मोमन मिलावो नाथ सो, श्री यमने मोमन मिलावो नाथ सो, तुम ही निज संग शोभित सदा भामिनी, और व्रज भामिनी लिए सब साथ सो. अनंत गुण भूषित पुराण पुरुषोत्तम, मोहि सोप्यो प्यारी ताहि ग्रही हाथ सो. शिव विरंचादि स्तुति करत तुम्हारी, हरिदास प्रभु निरख शोभा गही बाथ सो. पद 102 श्री यमुना जी तुम हो परम उदार, श्री यमुना जी तुम हो परम उदार, तुम्हारी कृपा भई जान कृष्ण जो करत ताहि अधिकार. श्यामल वरण समान शील गुण द्वय लीला अधिकार, क्रीड़ा रास विलास रस भरे प्रिय परिश्रम परिहार. लीला गूढ़ घोर कलयुग में रूप प्रकट विस्तार, अतुल प्रताप पुण्य पूर्ण जल अखिल विश्व उद्धार. यद्यपि पतित नाही जल परसत, दरस परस पियो वार, हरिदास को त्रास निवारो जिन डारो संसार. पद 103 श्री यमुना करत कृपा को दान, श्री यमुना करत कृपा को दान, जो को आवत दरस तिहारे सब को राखत मान. कली के जीव दोष भंडारी करत तिहारो पान, भये अनन्य सबही औरते सुर मुनि करत बखान. जे जन हरि लीला अधिकारी करत तिहारो गान. मैं मति मंद कहा लो बरनो रसिक दास जन जान. पद 104 श्री यमुना परम कृपाल कहावे, श्री यमुना परम कृपाल कहावे, दर्शन ते अघ दूर जात है, हरि लीला सुधी आवे. जे जन तेरे निकट बसत है, नंद नंदन रस पावे. जीव कृत्य देखत नहीं कबहु, अपनो पक्ष बढ़ावे. कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, यह सुन मन ललचावे. रसिक दास को दास जानियो, ताते यह जश गावे. पद 105 श्री यमुना जगत पावन करन, श्री यमुना जगत पावन करन, प्रथम जाको नाम स्मरत कोटि कली मल हरन. पेठी के जल परस करी रहे मिटत जिय की जरन. नाव स्मरत गई दुर्मति विविध पोषण भरण. उपजत उग्र वैराग्य जाते ले चले वाही शरण. सूर हरि की भक्ति दाता विश्व तारन तरन. पद 106 एक रसना गुण अपार कहा करी वर्णो, एक रसना गुण अपार कहा कही वर्णो. साधन सर्वे तजो भजो इनको नाम, जाके स्मरण ते होई गो तरणो. एक मन में निर्धार करके करो वास इनके तट निकट रहनो. कहत व्रजपति तुम सबन को समझाई, जपो हरि नाम और कछु न करनो. पद 107 श्री यमुना जी हमसे पतित उद्धारो, श्री यमुना जी हमसे पतित उद्धारो. पतित पावन सुन के आयो, बांध पाप को भारो. पतित पावन श्री कृष्ण जो की धरनी, दो मिल बात विचारो. सूरदास हृदय वसो निरंतर, श्री यमुना जी नंद दुलारो. पद 108 श्री यमुने जगवंदनी यश वेद ही गायो, श्री यमुने जगवंदनी यश वेद ही गायो. जे जन तट सेवन करे सो हरि पद पायो. स्नान दान की कहा कहूँ महिमा निर्धारी, नाम लेत शीघ्र ही पावे यद्यपि कर्मचारी. सुख करनी दुख हरनी पतितन पद दानी.
વહે જાત કૃષ્ણદાસ સુમુનિ ઓર જ્ઞાની. આ રીતે શ્રી યમુનાજીના 108 પદ અહીં વિરમે છે. વાલા વૈષ્ણવો, આપણે પાઠ પણ પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કરવાના છે, નહીં કે આપણે પુણ્ય મેળવવા માટે. અને સેવા છોડીને ક્યારે પણ પાઠ કરવા ન જોઈએ. મેં હમણાં એક વૈષ્ણવના મુખે સાંભળ્યું કે પાઠમાં એટલી બધી આસક્તિ છે કે સેવા કરતા હોય અને પાઠ બાકી હોય તો એમ થાય કે હજુ મારે પાઠ બાકી છે, અને ચિત્ત પાઠમાં ચાલ્યું જાય. તો ફલ હાથમાં હોય અને આપણે સાધનને દોડીએ તો એ યોગ્ય કહેવાય કે શું, એ આપણે વિચારવાનું છે. એટલે આપણે પાઠ પણ પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કરવાના છે, અને પાઠનું ફળ એ પ્રભુની પ્રાપ્તિ છે. તો એ પ્રભુ આપણને મળ્યા હોય તો પછી સાધનને દોડવા જવાય નહીં. એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ રીતે આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. આપણે અલગ અલગ પ્રકારે ગુણગાન કરીને પ્રભુને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. કરે કરાવે શ્રીનાથજી. ગઈકાલે સાંજે મને ખબર પડી કે આ પરમા એકાદશી શ્રી યમુનાજીના ભાવથી છે, એટલે તરત મનમાં થયું કે શ્રી યમુનાજીના શું ગુણગાન કરીએ, અને પ્રભુએ પ્રેરણા કરી કે શ્રી યમુનાજીના 108 પદનો પાઠ કરીએ. અને આપણે પાઠ ગાનના બદલે બોલતા હોય એ રીતે એટલે જ કર્યો છે કે જેને કારણે તેમાં શું કહ્યું છે તે આપણને સમજાય. એવી રીતે જ્યાં અટકવું જોઈએ ત્યાં અટકીને એવી રીતે પાઠ કર્યો છે કે જેના હેતુથી આપણે પાઠ કરીએ છીએ તેમાં શું કહેવા માંગે છે તેનું તાત્પર્ય આપણે સમજીએ તો વધુ આનંદ આવે. અને જો આપે યમુનાજીના 41 પદ અગાઉ વાર્તા સંગતિમાં શ્રવણ કર્યા હશે, કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃત, તો તરત જ પદ બોલતા એ વાર્તા સંગતિની સુધી આવે. એટલે આપણે આ રીતે પાઠ કર્યા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.